नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई एम JVN प्रोफेसर मंजू शर्मा। प्रोग्राम नेम BA B.Ed 6M। Session subject name Pedagogy of Social Science. Session name Peer Group Assessment. I am welcome to all. Today discussion topic session Peer Group Assessment. Before we talk to about group assessment, today we discussing peer assessment. What is peer assessment? Meaning of peer assessment, characteristics of peer assessment, overall considerations of peer assessment, overall discussion about this session. Peer group. Peer group assessment is the assessment of students' work by other students of equal status. Students often undertake peer assessment in conjunction with formal self-assessment. Typically, the members of a group assess the performance of their peers in terms of their contribution to the group's work. How do you conduct a peer assessment? These tips will help to make peer and self-assessment work for both of you and your student. Have a clear assessment criteria. Develop the assessment criteria with students. Use anonymous examples of work. Model responses. Provide feedback on their peer self-assessment. Peer assessment is an educational activity in which students judge the performance of their peers, and it can take different forms depending on the characteristics of its implementation, the learners and the learning context. Peer assessment can take different forms: ranking form, summative purpose, summative and format. Two types of assessment. Summative purpose, peer grading, peer evaluation. Formative purpose, peer feedback. Peer assessment or peer review provides a structural learning process for students to critique and provide feedback to each others, and also equips them with skills to self-assess and improve their own work. Why were peer assessment? Why we need to peer assessment? Peer assessment can empower students to take responsibilities for and manage their own learning. Enable students to learn to assess and give other constructive feedback to develop lifelong assessment skills. Enhance students' learning through knowledge diffusion and exchange of ideas. Motivate students to engage with course material more deeply. Peer student talk to each other, involve their work, summative work, informative work, and gathering and solution their problems. So they motivate student to engage with course material more deeply. Peer group assessment is more beneficial assessment. Consideration for using peer assessments. Students know the rationale for doing peer review. Explain the expectations and the benefits of engaging in peer review process. Consider having students evaluate
evaluate anonymous assessment for more objective feedback. Be prepared to give feedback on students' feedback or varying quality and discuss which kind of feedback or varying quality and discuss which kind of feedback is useful and why. Give clear direction and transformation in class peer review session and set defined deadlines for out of class peer review assessments. Students familiarity and ownership of criteria tend to enhance peer assessment validity, so involve students in developing an assessment rubric. Getting started with peer assessment. Getting starts with peer assessment. Identify assessment or activity for which students might benefit from peer feedback. Resources of teaching. Planning your approach. एक टीचर को कैसे रिसोर्सेज काम में लेने चाहिए और एक पीयर्स को कैसे गाइडेंस देना चाहिए. रिसोर्सेज टीचिंग. प्लानिंग योर अप्रोच. टीचिंग स्ट्रैटेजी. स्टूडेंट एंड टीचिंग कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कशन. इवेल्युएटिंग योर टीचिंग. Evaluating students, creating assignments, automated grading exercises, artificial intelligence assessment, exam checklist, in video quizzes, just in time teaching, papers, projects and presentations. Overall resources for teaching. So peer ग्रुप समूह, छात्र समूह आपस में कैसे अपने इंस्ट्रक्शंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को प्राप्त करने के लिए डेप्थ स्टडी करते हैं और सबमेटिव, रूब्रिक, इंफॉर्मेटिव, ओवरऑल फीडबैक, एक्सरसाइजेज, प्रोजेक्ट, क्विज, एग्ज़ाम चेकलिस्ट, ओवरऑल रिसोर्सेज के थ्रू हम पीयर्स की असेसमेंट को असेस कर सकते हैं. पीयर असेसमेंट स्ट्रेटजी फॉर फेयर एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री ग्रेडिंग. स्टूडेंट्स ई पोर्टफोलियोज़ के थ्रू हम स्टूडेंट्स को असेस कर सकते हैं, पीयर ग्रुप को. स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट. पीयर असेसमेंट में हम सेल्फ असेसमेंट से उनका वो कर सकते हैं. टेस्टिंग गाइडलाइंस, हमको क्या टेस्ट करना है, कौन से उसका एनेडक्टोल बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, रूब्रिक के थ्रू वो करना है. टेस्टिंग गाइडलाइंस तैयार करते हैं. इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स राइटिंग थ्रू कमेंट्स. स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक के थ्रू क्या कमेंट्स दे रहे हैं उसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया है, या वो आपस में उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. एकेडमिक ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी, कौन कैसे प्रॉपर उस काम को कर रहा है. ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी उनके वर्क का ग्रेडिंग से दिखेगा और डिसऑनेस्टी उनके फीडबैक से, उनके ग्रेडिंग से कैसे क्या काम वो कर रहे हैं. राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस, और कोई भी लेटर किसी भी चीज़ का रिकमेंडेशन से हम पीयर असेसमेंट को क्लियरली असेस कर सकते हैं. तो टुडे वी डिस्कशन पीयर ग्रुप असेसमेंट. The session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University and also say
Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.